चलें, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ DSG एनुअल कॉन्फ्रेंस 2022। जी, my name is Zainul Abideen. I'm the Chief Operating Officer for DSG Energy. कमिंग टू दिस कॉन्फ्रेंस आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आपने क्या देखा है इस कॉन्फ्रेंस में? I believe we've explored newer technologies. देखा है, we have an amazing turnout actually from the industrial sector as well. तो I believe this shows that the industrial sector is very keen for renewable energy और बहुत सारे initiatives, बहुत सारी नई कंपनीज़ ने लिए हैं जो कि renewable energy की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनको भी देखें, दोनों मोस्टली पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर हु हैव ईदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सोलर और दोज पीपल हु आर विलिंग टू इंस्टॉल सोलर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या फ़ायदा आता है सोलर एनर्जी से? आई बिलीव एनर्जी मिक्स इज़ द राइट वर्ड टू आस्क। एनर्जी मिक्स की जो कॉस्ट है बेसिकली वो रिड्यूस होती है। तो अगर आप जेनसेट्स यूज़ कर रहे हो या बापडा की सप्लाई यूज़ कर रहे हो तो लाइक यू सीन दैट देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन since in the past 5 years. But if you consider solar energy, I believe the sun is free. So whether you install it today, whether you have installed it 5 years ago, or whether you're planning to install it 5 years later on, any time that you evaluate solar, उसकी एक पर्टिकुलर कॉस्ट होगी और वो कॉस्ट जो है वो लाइफ टाइम के लिए जो है वो रहती है। सो एक लाइफ टाइम कॉस्ट की अगर बात करें तो सोलर जो है इफ़ यू पुट इट ऑन लाइफ टाइम फॉर 15 और लेट्स से 20 ईयर्स, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट आजकल के भी रेट्स के लिहाज से इट कॉस्ट यू अराउंड 4 to 5 रुपीज़ अ यूनिट। सो आई थिंक दैट ब्रिंग्स द ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डाउन क्वाइट इफेक्टिवली। जो आजकल एनर्जी क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में, उसका सोलर एनर्जी का क्या पार्ट है? आई बिलीव एनर्जी क्राइसिस हैज़ टेकन अ डिफरेंट टर्न इन पाकिस्तान। एनर्जी क्राइसिस अब इस चीज़ का नहीं है कि हमारे पास जनरेशन नहीं है, अब हमारे पास जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। सो आई बिलीव सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं, ख़ास करके रेजिडेंशियल सिस्टम्स और इन बिल्ड इस तरह के सिस्टम जो अपनी एनर्जी कंजम्पशन के लिए लगाए गए होते हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रैपिडली इवॉल्व कर रहा है पाकिस्तान में। एंड कंसिडरिंग दैट कॉन्सेप्ट आई बिलीव जब एनर्जी जनरेशन जो है एट द लोड वाली साइड के ऊपर जो है शुरू हो जाएगी, तब ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी इशूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो क्या चेंजेस, क्या पॉलिसीज आ सकती हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर को हेल्प करें? आई बिलीव द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी प्लेस्ड इन लॉट ऑफ पॉलिसीज़, खास करके RE 2019 की अगर हम बात करें तो 2030 तक के प्लान्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ के। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ इन Pakistan. There have been a lot of solar power plants that have been installed in solar power plant, both in a small scale as well as a large scale. Especially considering renewable energy, government के जो initiatives हैं, the state bank financing scheme has enabled a lot of industries to go for solar. So I think that is something which has had a phenomenal effect on the industrial solar market in Pakistan. Thank you very much, sir. Thank you for having me.